Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We'll start with technicals and derivatives. So yesterday we saw the Nifty has again rallied close to 17,800 level, and Bank Nifty has closed at 39,239. So from the derivatives perspective, the longs has been added in the Nifty, and there was a short covering in the Bank Nifty. Technically, what we believe the 17,800, this continuity of the momentum will be there, and close to 18,000, maybe above 18,000. It should be the immediate upside for the Nifty, and Bank Nifty should rally close to 40,000. That is the view for both the indexes. The maximum open interest was seen in the call option was seen at 18,000 strike price, whereas the maximum open interest in the put option was seen around 17,700, 17,600, and 17,500. So on the way down, this 17,700, 600, and 17,500 might act as a support from the derivatives point of view. Whereas in the Bank Nifty, the maximum open interest was seen in 40,000 call option and 39,000 put option. So this remains the range for the Bank Nifty. Coming to sector specific, auto was also one of the leader in yesterday's session. Few stocks like MRF, Eicher Motors, TVS Motor, Maruti, and Bajaj Auto are looking very strong on charts. Though, so this are the few stocks which can keep the momentum in today's session also, and we can see have some positive bias. Whereas again in reality, Oberoi Realty, DLF, and Godrej Properties are looking positive on charts. So these are the stocks which can outperform in today's session. After reality, we are also liking the oil and gas space, in which HPCL, MGL, IOC, and Reliance. These are the stocks which can be watched for today's session. The positive momentum is likely to continue in this space. The only sector which was under pressure was PSU banks, specifically Bank of Baroda and SBI. Both has formed the bearish candle in yesterday's session. So this would be little sideways to negative bias. The buying might not be seen in specifically a day or two. So cautious view in Bank of Baroda and SBI for next 1 or 2 trading sessions. VIX was closed at 17.69, so which is below the 18 level. So volatility is again at the lower side, so which is positive for the market. As per derivatives data, some longs were built up in few stocks. So for example, Ambuja Cement, Apollo Tyre, Nam India, ONGC, and ICICI Bank. These are the 5 best picks which has added the long positions in yesterday's session. Coming to FI data, in cash, FIs again went long close to 1376 crores, and DI was the net sellers by 136 crores. Whereas if you look at the futures data in FI, they again went long by 2,557 contracts. They are net long by 59% in the index futures. So FI's data remains positive, which make us believe that even our market will also remain positive, and we should be heading towards 18,000 on Nifty and 40,000 on Bank Nifty. As and when it comes close to that, we'll review it again, and then we'll again cross-check what would be the further directional view. So right now we are heading for 18,000 and 40,000 on the Bank Nifty. That's all. The call for the day, the technical call we are given Bajaj Auto. We are recommending buy in the range of 4080 to 4050. The stop loss is 3975 for the target of 4250. The derivatives call for that is Tata Power futures in the range of 236 to 237 with a stop loss of 230. The target would be 249.50. Thanks. That's all from my end. Hand over to Bhavesh. Hi, good morning all. So few updates starting with zinc. So zinc prices actually surged in London Stock Exchange by 7% yesterday. This is after Europe's largest smelter said that it would halt production for due to low availability of coal. So this may be temporary, but it is not known when it will restart. So for the time being, we might see some uh, improvement in zinc prices, and that is favorable mainly for Hindustan Zinc and Vedanta. But given the recession fears in the next 6 to 9 months in US and Europe, in commodities we could have a very sharp correction. So before taking a
little longer term call, you have to be very cautious. A second update on Mastech. So Durham University has chosen Mastech for its Oracle e-business suite. So this is positive for Mastech, and Mastech has a very strong has given a very strong guidance of growing the revenues by 36% CAGR over the next 5 years. So although we don't cover the company, it needs to be watched out if the company continues to deliver this kind of growth. Third, Adani has plans to enter aluminum business in Odisha. So they have a very big plan, but aluminum is a very capital intensive industry, and it will take a lot of time for them to set up this aluminum business. At least we are, even if they start today, so at least we are 5 years away from it. So in the near term, there will be no impact on any other company like Nalco or Hindalco. And then on techno electric and engineering, the company has received orders worth 1400 crores from Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam. So this is positive for techno electric. So that's it from me. Over to you, Prabhakar sir. Thank you, Bhavesh. Good morning, team. The Q1 results of FY23 is over. Now, where IT has been very flat, whereas bank has given better results. Now, and there are other sectors which have performed. Oil and gas was a big disappointment. Let it be Reliance, ONGC, BPCL, HPCL. It is due to few government orders, so there was a disappointment there. But many companies have performed well. But many brokerages have started to cut down on their EPS outlook. Now, said that now there are few things which we need to understand. One thing is interest rates have started to rise. So no, deposit rate hike has been done by State Bank of India and Bank of Baroda. Now other banks also would follow, because credit growth is almost near 15%. Last RBI data said it is 14.3% or something. So whereas deposit is not growing more than 8%, 8 or 9%. So if deposit has to grow, you need to pay higher interest rate. So we expect deposit rates to move higher, so that they can attract more deposit, and now lending also will start happening. So this is that is why State Bank and Bank of Baroda yesterday was not performing in the market, but I think it will not have a material impact on the bank's performance. NTPC, now they have said 16,547 crores they will spend on renovation and modernization of 20 stations, which is coal-based and gas-based. Last year they have spent about 9,050 crores. It is to make the all the power plant up to the mark, so that it is in the running condition. Railways has conducted a test run of 3.5 kilometer long freight train. It is called Super Vasuki, and 295 loaded wagons were carrying over 27,000 tons of coal between Cobra and Chhattisgarh, which has taken almost 11 hours 20 minutes, and 267 kilometers. So this is something different. Concor will be the beneficiary of this, but we need to understand. India is trying a lot of things so that we can evacuate coal at a faster pace. SpiceJet settles dispute with Lessar company for 200 crores, and to clear that, it is seeking loans from the bank. Crude has corrected. Now crude is almost at $92. OPEC basket is at $100. So this is very positive. When crude comes down, our import also comes down. But it will have a lag impact. But oil marketing company with a lag impact, they will start to benefit out of it. MGL has cut prices on PNG and CNG. Very positive for many companies. Now it is positive for transporters also. So this is something to watch out.
Amul and Mother Dairy have hiked milk prices by 2 rupees. Southwest monsoon deficiency in northeast intensifies, but overall pan India as of 16th August, that is yesterday, there is a 10% surplus, and south and central India has got surplus rainfall. Water reservoir level or as on 11th August 2022 is at 9-year highest level. They are almost at 69% of the live storage. No, in 2014, no, it was at 72% of the live storage. So this is something very good as a data, because now our reservoirs are getting full, which will help us in agriculture. But our wheat and rice storage has also come to a 5 years low, which is slightly alarming at this pace. BDL management gave an interview to CNBC. They said they are targeting a revenue of 3,200 crores by FY23. Mr. Siddharth Mishra, CMD, told to CNBC, and they said they have an order book of 13,000 crores. During this year end, they expect the order book to go to 20,000 crores, and trade receivable 1,800 crores. And the company is also expecting export orders in next few months. So if the export order starts to come, that will be very positive for BDL. Walmart said it has now expected a decline of 9 to 11% in operating income over the full year, negative for Indian textile exporters, and even retail segment IT stock will have some impact due to it. Indian Oil Corporation and Praj Industries, they have tied up. They have with their technology. Prime Minister has inaugurated ethanol biorefinery, where it is in 35 acres land which has been done. It will process 2 lakh tons of rice straw, and it will generate about 3 crore liter of ethanol. So something positive for Praj Industries. KEC International yesterday won new orders of 1,300 crores. So in multiple departments they have won it. Navakar Corp has agreed to sell Vasad, Gujarat. They have a unit there, CFS unit there. So as a going concern to Adani Logistic, and it is 835 crores, and it will be a lump sum sale. So yesterday the stock was down 16%, and this is the reason. And Navakar Corp says it will be a debt-free company, and after that they will have in Panvel 3 CFS station, and in Gujarat they are building one more station. So at least the company will become debt-free, but we don't track the company. But there are few stocks which are doing very good. Gujarat Alkali Chemical, yesterday there was a block deal where a foreign fund has bought at 831. So I think another 10 to 15% rise in Gujarat Alkali Chemical is possible. I was listening to the con call of Ami Organic, where they are saying that they are in a lot of chemistries, and one such chemistry is for lithium battery, where they feel when BV manufacturing or battery manufacturing in India starts, they will be able to supply to them. So this is something very positive. With that, over to you. It is Brijay. Hello. Hitendra, over to you. Yeah, thank you, sir. And good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग को एक राजस्थान विद्युत से ऑर्डर मिला है। 1455 करोड़ का ये ऑर्डर है। सो ये पॉजिटिव रहेगा। मैस्टेक की जो ड्यूरम यूनिवर्सिटी है, मैस्टेक को एक ड्यूरम यूनिवर्सिटी से चूज किया गया है उनकी जो लीडिंग ओरेकल क्लाउड पार्टनर के लिए, और वे ओरेकल ई बिजनेस सूट डेवलप करेंगे जो कि क्लाउड माइग्रेशन जर्नी रहेगा। पर हम देखेंगे जिंक की प्राइसेस में अगर 7% राइज की गई। इसका रीजन यही था कि यूरोप के जो लार्जेस्ट स्मेल्टर है उन्होंने कहा कि वो प्रोडक्शन होल्ड करेंगे कि कोल की शॉर्टेज चलते इसे हेवी इंडस्ट्रीज को होल्ड करने के लिए कहा गया है।
सो इसके चलते थोड़ा बहुत हमें मटेरियल इम्पैक्ट हिंदुस्तान जिंक या इसको भी देखने को या वेदांता को भी मिल सकता है। अडानी ओडिशा में एंटर करने वाला एल्यूमिनियम बिजनेस के लिए, और इसका लगभग केपेक्स देखा जाए तो एल्यूमिनियम बिजनेस के लिए लंबा समय लगता है, 5 साल तक दिखेगा। सो इसका जो मटेरियल इम्पैक्ट इतना कोई दिखेगा नहीं नालको और हिंडाल्को को। अभी हम जैसे देख रहे Q1 रिजल्ट्स FY23 के खत्म हो गए हैं। अगर हम रिजल्ट्स ओवरऑल पे देखेंगे सेक्टोरल वाइज तो आईटी फ्लैट था, बैंक्स के रिजल्ट अच्छे थे, और ऑयल एंड गैस स्पेस में देखा जाए तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, क्योंकि उसके जो टैक्सेस हैं उसके चलते और जो उन्होंने लॉसेस लिए गए हैं उसके चलते रिलायंस, ONGC, BPCL, HPCL इसमें। पर कुछ सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखा और अच्छे से आउट परफॉर्म भी किए गए हैं। अभी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट है उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती जा रही है, तो उसके चक्कर में डिपॉजिट रेट्स भी हाइक कर रही है। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिपॉजिट रेट्स हाइक की, इनके चलते दूसरी बैंक्स भी अपनी डिपो रेट हाइक करेगी, डिपॉजिट रेट। क्रेडिट ग्रोथ देख रहे तो 15% के आसपास है, लास्ट RBI ने 14.3% के आसपास कहा था। बट डिपॉजिट जो है वो उस लेवल से ग्रो नहीं हो रही है, डिपॉजिट 8 से 9% से है। सो अगर हम डिपॉजिट रेट हाइक करेंगे तो थोड़ा उन्हें भी लुक्रेटिव ऑप्शन मिलेगा और थोड़ा सा हमें ट्रैक्शन भी मिल सकता है और लेंडिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि इसके चलते हम देखें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा कल हम थोड़े से सुस्त या नरम चल रहे थे, तो बट इतना कोई मटेरियल इम्पैक्ट उस पर नहीं दिखेगा। NTPC ने 16,547 करोड़ का रेनोवेशन और मॉडिफिकेशन किया गया इसके जो 20 एग्जिस्टिंग स्टेशन है इस पे। लास्ट ईयर भी इन्होंने मॉडिफिकेशन किया था 9,050 करोड़ का, ताकि ये स्टेशन एकदम अच्छे से फंक्शन करे। रेलवेज ने एक 3.5 किलोमीटर की फ्री ट्रेन रन की, जो कि सुपर वासुकी नाम की है, और इसके ऊपर कोल लोडेड थी, और ये कोबरा छत्तीसगढ़ में 267 किलोमीटर के आसपास की रन थी। कॉन्कोर इसके थोड़े बेनिफिशियरी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। स्पाइसजेट ने एक सेटलमेंट किया है जो डिस्प्यूट था अपने लीजर्स के साथ 200 करोड़ के मनी के साथ। क्रूड भी हम देख रहे हैं अभी 92 के आसपास है, बहुत ही बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, बट ये थोड़ा लैगिंग इम्पैक्ट है, क्योंकि हम जो इन्वेंट्रीज है वो लेटर इन्वेंट्रीज वो बेनिफिट करेगा। पर अगर क्रूड जैसे नीचे रहेगा तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसके ऊपर भी हमें थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है और भी अच्छी रहेगी। MGL ने प्राइस कट्स किए हैं PNG और CNG पे 4 रुपीज और 6 रुपीज से। सो ये बेनिफिशियल रहेगी जो कि PNG CNG इंडस्ट्रीज को ये सप्लाई करते हैं। अमूल और मदर डेयरी ने अपने मिल्क प्राइसेस पे 2 रुपीज पर लीटर के हिसाब से हाइक किए गए हैं। साउथ वेस्ट मानसून देखा जाए तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड में डिफिशियंसी दिखाया गया है, और बाकी सदर्न और सेंट्रल साइड में 10% सरप्लस दिखाया गया। वाटर रिजर्व भी देखा जाए तो 9 ईयर हाई पे है, लास्ट 2014 से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है। और हम देख रहे वीट और राइस की जो लेवल्स है सरकारी भंडारों में, उसमें वो 5 ईयर्स लो के आसपास पे है। सो एक ये थोड़ा अलार्मिंग रह सकता है। BDL के मैनेजमेंट जो सिद्धार्थ मिश्रा जी ने कहा है कि वे अपना रेवेन्यू 3200 करोड़ तक ले जा सकते हैं। इनके पास करेंटली ऑर्डर बुक है 13,000 करोड़ की, और वे उसे बढ़ाकर 20,000 करोड़ तक ले जा सकते हैं। और उनकी जो अभी नेट रिसीवेबल्स है इस बार के 1,020 करोड़ के तो ऑलरेडी पेंडिंग है। और ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट से भी इन्हें ऑर्डर मिल सकता है। अगर एक्सपोर्ट से ऑर्डर मिलते हैं तो BDL को और बेनिफिशियल हो सकता है और इस स्टॉक की प्राइस और बूस्ट कर सकती है। वॉलमार्ट ने कहा है कि उनकी जो सेल्स है वो 9 to 11% के आसपास जो गाइडेंस और डिक्लाइन कर सकती है फुल ईयर के लिए। सो ये नेगेटिव रह सकता है टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए जो वॉलमार्ट और जैसी कंपनीज को सप्लाई करती है, और सेकेंडली IT स्टॉक्स के लिए। IOC और प्राज ने इनॉग्रेट किया है इथेनॉल बेस्ड बायो रिफाइनरी। ये 2 लाख लीटर टन का राइस जो राइस को ब्लेंड करेगी और इससे 3 करोड़ लीटर तक का इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी। KEC ने ऑर्डर वन किया है 1,300 करोड़ रुपए तक का। नौकर कॉप ने जो उनकी वलसाड की CFS यूनिट है वो उसे अडानी अडानी लॉजिस्टिक को सेल कर दिया एक कोइन कंसर्न और लमसम भाव में स्लम सेल में 835 करोड़ के भाव पे। उससे चलते हम देखा कल 16% स्टॉक भी डाउन था, पर इसके चलते नौकार कॉप एक बैटरी कंपनी हो जाएगी, और वे अपना एक CFS स्टेशन गुजरात में ही ओपन कर रहे हैं और 3 CFS स्टेशन पनवेल में ओपन। हालांकि हम स्टॉक को ज्यादा ट्रैक नहीं करते तो हम इससे ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकेंगे। गुजरात अल्कली जैसे स्टॉक्स में हम कल देखेंगे, कल एक ब्लॉक डील हुई थी, एक फॉरेन फंड ने उसमें इन्वेस्ट किया था एट द रेट ऑफ 831 के भाव में। तो यहाँ से 10 से 15% तक की हमें यहाँ से अपसाइड दिख सकती है। अमी ऑर्गेनिक्स में भी देखा गया तो ये बहुत सारी केमिस्ट्री में है, सर कौन कॉल सुन रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और जैसे EV का बूम बढ़ेगा और EV की लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड होगी तो वे उससे केटर भी कर सकते हैं। So that's it from my end. Thank you everyone for attending the morning call from Women of the Summit.